At an elevation of 6,700 feet, Darjeeling still remains the crowning jewel of the eastern Himalayan tourism. With a rich heritage of tea, timber, tourism, and toy train, the most magnificent attraction of Darjeeling remains in the majestic view of Kanchenjunga, the third highest peak of the world. Like the million of stars during daylight, some beautiful places remain hidden in the glory of the Darjeeling. Serving from 1879, the toy train of Darjeeling Himalayan Railway is still carrying a lot of passengers to the Queen of the Hills. In 1999, DHR is declared a UNESCO World Heritage Site. Just 16 miles away from Darjeeling town, on the route of Tukbhat Tea Estate at Bijanbari Pulbazar area, there is a village that homes a 350 years old monastery and a centenarian church. The village is called KIZOM. The secret of KIZOM village or KIZOM Basti's hidden nature lies in the very steep climb and perilous mountain roads. Along with the view of golden sunrise over Kanchenjunga, one can also see the Rangit Basin and Jorthang area of Sikkim at one side and Kalimpong area of West Bengal at the other. Far from the madding crowd, one can take a small forest trail to walk among the different cultures of KIZOM village. Most of the 50 to 55 households of KIZOM village residents rely upon agriculture and farming for their living. Local villagers usually avoid this hiking trail after sundown due to the fact that this place is frequented by leopards. Leopards regularly hunt down farm animals and mostly stray dogs. However, these leopards are the reason why the people of the village remain very much united. When the weather is clear, the trek route towards the age-old monastery is always accompanied by the view of lush green trees, flowers and different kind of vegetables and fruits the local villagers grow over there. Mount Pandim or the foot part of the sleeping Buddha view of the Kanchenjunga family can be very clearly seen over the cliffs while en route.
There are symbols of age-old Tibetan and Buddhist culture all along the road towards the monastery. The village is mostly populated by either Lindus or lepchas, who usually take either Buddhism or Christianity as their religion. The crowning jewel of the hidden KIZOM village is Karmi Gumpha or the Karmi Monastery. First constructed as the wooden palace of the local king, the building of Karmi Monastery is entirely made up of timber, and it was converted into a monastery as long back as 1670. The ambience here is purely ethereal, serene, and calm, so one can choose this place for the ultimate meditation point. राबते आप बोलिए कितना साल का पूरा? अभी तक तो 300 वर्ष के वो टोटल भरा है। अभी ये जो बनाया हुआ है ये कौन सा व्यक्ति है जो वो जगह? ये 1955 में 1955 में इधर हर साल बुद्ध पूर्णिमा में प्रोग्राम होता है, सब आते हैं, जो बुद्धिस्ट होता है सब आता है, जो जमान होता है ना भक्त होता है, तब ये पुथी पढ़ा जाता है। हाँ ये तब ये पुथी निकाल के पढ़ा जाता है, सब पढ़ते हैं। बुद्ध जयंती आने से 4 दिन बाद आगे से जो पढ़ रहा है आगे से बुद्ध जयंती पूर्णिमा होता है, उस दिन हमारा ऐसे चक्कर भवन लगता है, इसका गाना बाजा बजा के कितना आदमी आ जाते हैं? तो होता है गाँव, ये सारा गाँव आता है, सारा गाँव का भी लोग आते हैं। आते हैं, दार्जिलिंग के आता है, बाजार के लोग सब आते हैं, आकर ऐसे पूजा करता है। आप कितना साल से इधर हैं? हम तो छोटा से नहीं आपका पिताजी भी इधर के, मेरा चाचा भी इधर के, चाचा भी पहले चाचा आया, चाचा चल गया, फिर बाप आया, बाप चल गया, फिर मैं अभी देखभाल करता हूँ, थोड़ा से ऐसा देखभाल करके पूजा पाठ करता हूँ, सुबह शाम को पूजा पाठ करता हूँ। फिर ऐसा जिन पूजा आता है ना, बड़ा बड़ा पूजा आता है, अभी ये दिसंबर में फिर एक पूजा आता है, वैसा गांव के थोड़ा गांव पूजा होता है, फिर पूजा से आप लोग देते हैं? हाँ हमारा चलता है ये
प्रसाद है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा से ऐसा फल फूल चढ़ाना पड़ेगा, ये बत्ती बालना पड़ेगा, एकदम। ये पानी भी चढ़ाना पड़ेगा, जल एकदम। कितना पुटी होगा इधर? इसमें कंजर तिंजर बोलता है, हाँ। कंजर तिंजर बोलता है कंजर हमारे तिंजर प्रदेश बोलते में। हैं, इसमें 108 होता है, 108 पुटी 108 होता है इसमें। अच्छा। फिर इसमें थोड़ा अंदर भी होता है, इसके अंदर पार्ट भी, में। हाँ, पार्ट पार्ट पड़ने से होता है। जो निकाल कर पड़ता है। पूरा बुद्ध पूर्णिमा का दिन ये पूरा पुटी पूरा पड़ा पूरा जाता होता है, है, हाँ। पूरा पड़ा जाता हाँ, है। पड़ा जाता है। ये एक ही साल में, वो एक ही साल में आता है बुद्ध जयंती, इसके बाद में पड़ता है। इसको पढ़ के फिर ऐसे रखना नहीं होता है, फिर इसको रन लगा के, थोड़ा से गाँव रन लगा के फिर इसको ये रंग होता है ना, रंग होता है पेंटिंग। ये पहले पहले ये जड़ी बूटी होता है ना, हाँ, जड़ी बूटी से बने जो हाँ, होता है, ऐसा वही से बना बोला है। हाँ, तो फिर इसको मिटाने से फिर अभी जो रंग होता है ना, अरे साले में ऐसा अच्छा नहीं होता बोल रहा है। पहले भी हम लोग इसे ट्राई करने से बुलाया था। ऐसे कोलकाता से आया, एक इंजीनियर आया था, ये रंग ऐसा पेंटिंग टेस्ट करके इसको जो है वही रहने देना। हाँ, रहने देना। पहले पैलेस था इधर, हाँ, पहले से पैलेस था। जब जाने का वक्त ये हाँ, जगह ये गए, दान करके दान करके गए थे। क्या नाम था? ऐसा तेंदुक महाराज, तेंदुक नाम है ना, तेंदुक तेंदुक महाराज को बोलता है ना, और राजा बोला है। When most of the villages surrounding Darjeeling are crowded with numerous lodges and homestays, the only and the very first homestay of Kizom village is opened by ever smiling Mr. Nimesh Thulung Hang just in September 2021.
The homestay is named Prathmesh Homestay on the name of their beloved son. The homestay is a house of various kinds of plants and orchids. Till date, there are 5 to 6 rooms in this homestay, where each room has got its own surprise. Depending upon the choice, availability, and luck, one might get a bamboo villa or a room made up of cane flakes. Some room also holds a lot of Nepali cultural utensils. The hospitality of Mr. Nimesh Thulung and his family is beyond comparison. One might come here as a random visitor, but would obviously get back from here as a friend of the family. नमस्ते मैं निमेश राय जी प्रथमेश होमस्टे का होस्ट। तो ये मेरा मिसेस प्रार्थना सुब्बा और ये मेरा बहन प्रकृति सुब्बा। तो हमारा ये होमस्टे इसी साल से शुरुआत किया था 2021 सितंबर 9th of September। तो हमारा अभी तक तो बोलिए। तो जगह तो आप लोग ने देखी लिया होगा, तो अच्छा ही है। थोड़ा रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है, रास्ता प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा थोड़ा 1-2 दिन में। अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमारा इधर ये जो किजोम बोलता है हमारा ये जो विलेज का नेम, तो एक्चुअली ये जो जब पहले राजा होते थे ना, तो उस टाइम पे ये नाम रखा था किजोम। तो पता नहीं ये लेप्चा में क्या बोलता है वो किजोम को, लेकिन उस टाइम लेप्चा लोग ने रखा था ये किजोम। तो इधर बहुत ऐसा हिस्टोरिकल और विंटेज प्लेसेस मौजूद है। तो एक तो आप लोग ने नहीं देखा होगा नीचे चर्च किजोम जियोबा जेरिन चर्च बोलता है उसको। तो वो स्टेबलाइज हुआ था 1815 ईयर्स एगो, तो 1815 साल में। तो अभी मोनेस्ट्री भी दिखा होगा आपने, वो नेजी कर्मी मोनेस्ट्री बोलता है, उसका 1670 में स्टेबलाइज हुआ था। वो एक्चुअली उधर एक पैलेस था वो तेंदु पल्जर का, तो उसको बाद में उसको मोनेस्ट्री बना दिया। तो वो तेंदु पल्जर का एक और पैलेस है उधर, कर्मी फार्म बोलता है, अभी उसका ग्रैंडसन रह रहा है उधर एंड्रयू पल्जर। तो ऐसा हिस्टोरिकल प्लेसेस है। अभी उधर पंचकन्या धाम में भी आप लोग उधर से भी सनराइज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टाइगर हिल में जो सुबह देखने को मिलेगा। तो वहाँ से 360 व्यू भी अच्छा से मिल जाएगा। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो इधर से भी आपको रूम से ही सनराइज व्यू भी देखने को मिल जाएगा, और कंचनजंगा तो ऐसे ही दिख जाएगा। और ये सब है हमारी। और वैसे कैपेसिटी कैसा है, कितना जन? अच्छा, कैपेसिटी अभी तो हमारा 6-7 रूम जैसा है। तो आराम से फैमिली भी आ सकता है, सोलो ये सब आ रहा है अभी भी, और अच्छा से बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी और रूम बन रहा है, और एडवांस में रूम्स बन रहा है। तो जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। The cautionary tale to reach this hidden village lies on the fact that this road strictly meant for a very strong driver who is
habituated in driving in these hill roads. Another religious abode of the KIZOM village, the Jehovah Jireh Church, is approaching its bicentenary soon. The farewell from KIZOM village is given by Jumuni Park, a famous spot, while the way back to Darjeeling.